let's take this for an example. So this is a factory, cost of 1 lakh rupees, we produce one. So when we produce one, the total expenditure remains 1 lakh because it is fixed expenditure, but production is only 1 unit. So per unit technically it's 1 lakh rupees. The division of fixed expenses is 1 lakh divided by 1. But in this case, the fixed expenses remains 1 lakh rupees, but I produce 10,000 units, the capacity of this factory. So when I produce 10,000 units, this 1 lakh is used by 10,000 products. Each product using 10 rupees. This is not true theoretically, but we can take it for practical understanding. So when we take break even point in units, we do fixed expenses 1 lakh upon contribution in units. So per unit कितना contribute हो रहा है, ये पूरे fixed expenses में से what is the amount that is being like the total contribution per unit, वो कितना यूज हो रहा है टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस में. फ्रॉम दैट वी गेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. नाउ ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स को जब सेल से मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़. इट्स वेरी सिंपल लॉजिक. मैंने इतना प्रोड्यूस किया, मेरा इतना सेल्स हो रहा है, सो मल्टीप्लाई इट. सो अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट इतना चीज़ों का सेलिंग है, अगर उसको लेट्स अज्यूम 1000 यूनिट सेल किया तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा. बट 1000 यूनिट्स का एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट, सो सेल्स इन यूनिट्स होगा अगेन एट 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो मेरा ब्रेक इवन होगा. दैट्स वाई इनटू सेल. नाउ लेट्स गो बैक टू दिस फॉर्मूला. कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, करेक्ट. लेट्स टेक ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सब्सटीट्यूट करते हैं. फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन. फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैंसिल. वन contribution was in denominator, therefore it comes in numerator. Contribution is equal to contribution. That's it. Very simple. Next, BP in rupees is fixed expenses upon PV ratio. I'll get back to this once I'll explain PV ratio. Okay. Sales required to earn a desired amount of profit. Okay. So like it's very simple to understand this. Break even point in rupees, break even point in units. What is break even point in units? के इतना यूनिट्स बेचने पर सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ लेते हैं क्योंकि दैट्स फॉर्मूला. बस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इज व्हाट, इतने रुपीज़ का सेलिंग के बाद यू लर्न नो प्रॉफिट नो लॉस. बट नाउ दिस इज़ फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस. इफ़ आई वॉन्ट टू नो कि मेरा 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट के लिए क्या रहेगा, तो वॉट डू आई डू, BP in rupees plus 10 lakh is what? My desired profit. So this becomes desired profit. Sorry, rephrase. BP in rupees is what? Like itna rupees ka, itne rupees pe you'll break even. Now fixed expenses upon contribution into sales. So BP in rupees. हाँ, सो फिक्स एक्सपेंसेस में